तो फ्रेंड्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएससीबी क्लास 10th का संस्कृत का 5th नंबर का चैप्टर गुणवती कन्या। आगे के एक सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, जैसे उसमें आपने देखे होंगे। गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत चारों लैंग्वेज का यूज़ कर लेती हूँ। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पोएट डांडी इज़ वेल नोन एज प्रोज राइटर इन संस्कृत लिटरेचर। तो जो कवि दंडी, नाम उनका डांडी है। डांडी वो गद्य यानी प्ले स्टोरी के पोएम नहीं, स्टोरी के सुप्रसिद्ध लेखक है संस्कृत साहित्य में कवि दंडी गद्यकार तरीके सुप्रसिद्ध છે. He has written a prose work named दस कुमार चरितम. Its theme is imaginative. उन्होंने दस कुमार चरितम नाम का एक स्टोरी का बुक लिखा हुआ है, ग्रंथ लिखा हुआ है। वो ना इमेज करके स्टोरी बनाते हैं। તેમણે દસ કુમાર ચરિતમ નામનો ગદ્ય ગ્રંથ રચ્યો છે. તેનું કથાવસ્તુ કવિએ પોતે કલ્પેલું છે, યાની ધારણા કરીને વિચારેલું છે. કોઈ સ્ટોરી ઐતિહાસિક કેવી નથી, પોતે જે કલ્પના મનમાં આવે એ પ્રમાણે સ્ટોરી લખે છે. 10 Kumars, as it was decided start traveling in 10 different directions. जैसे थोड़ा सा है जो 10 राजकुमार है वो अब नक्की यानी तय किए हुए रस्तों पे 10 दिशाएं होती है, 10 दिशा पे यात्रा के लिए निकल जाते हैं. 10 कुमारों नक्की કર્યા મુજબ જુદી જુદી 10 દિશામાં યાત્રાએ નીકળે છે. During the journey, whatever every Kumar has experienced is described in 10 Uchvasis section of this work. એટલે કે આ યાત્રા દરમિયાન પોતપોતાની આ યાત્રા દરમિયાન જે કુમારને જે અનુભવ થયા હતા તે અનુભવોને 10 ઉચ્છ્વાસ આ ગ્રંથમાં આવેલા છે. जो कुमार थे वो 10 दिशाओं में जाते हैं, अपनी यात्रा ट्रैवलिंग स्टार्ट करते. तो वो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो भी उनको एक्सपीरियंस होता है वो उच्छ्वास में उन्होंने उसको बयां किया हुआ है. In the 6th उच्छ्वास, Mantragupta describes his own experiences of journey. At this juncture, he narrates the story of Shakti Kumara. This story has been edited and presented here in brief. છઠ્ઠા ઉચ્છ્વાસમાં મંત્રગુપ્ત પોતાના યાત્રા અનુભવને વર્ણવે છે. તે દરમિયાન તે શક્તિકુમારનું એક આખ્યાન કહે છે. આ આખ્યાનને ટૂંકમાં અહીં અને અંદર एडिट કરીને सुधारा કરીને અહીં प्रस्तुत કરવામાં આવ્યું છે. जो वो 10 राजकुमार जाते हैं उनमें से एक राजकुमार अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे बयां करता है. तो वो जो उसका एक्सपीरियंस उसको एडिट करके शॉर्ट में यहाँ पे दिया गया हुआ है. Men and women are two wheels of a chariot in the form of household life. स्त्री અને પુરુષ એ ગૃહસ્થ જીવનરૂપી રથના બે પૈડા છે. जस्ट जब कहते हैं कि स्त्री और पुरुष यानी नारी और नर एक ही रथ के मैरिज लाइफ में एक ही रथ के दो पहिए होते हैं जो सिमिलर चलते हैं. वैसे यहाँ पे बोला है, as it is essential to have both the wheels of a chariot similar in shape and size. Similarly, men and women working as wheels of household chariot should also be similar in thought and virtuous. તો यहाँ पे बोला કે જેમ રથના બંને પૈડા આકારમાં અને પ્રકારમાં એક સરખા હોવા જરૂરી છે, તેમ ગૃહસ્થ જીવનરૂપી રથના પૈડા બનતા સ્ત્રી પુરુષ પણ આકાર અને પ્રકારમાં સરખા હોય તે જરૂરી છે. जस्ट बोला गया है कि जैसे रथ के दोनों पहिए वो सेम साइज के और सेम ही आकार के प्रकार के होते हैं. एक छोटा बड़ा या तो और थोड़ा सा पुराना थोड़ा सा अलग ऐसा कुछ नहीं होता है, एक जैसे ही होता है, वो ज़रूरी है. वैसे ही मैरिज लाइफ के जो पहियों का हमने सिमिलरिटी बोला है, जो पहिए है उसमें जो पहिया है वो स्त्री पुरुष बनते वो लोग भी ना गुणों में, सोच विचार में एक जैसे होने वो बहुत ज़रूरी है. Shakti Kumar, the hero of the story, is enward
વિથ ગુડ ક્વોલિટીઝ. જો શક્તિકુમાર જે અહીંનો આ કથાનો નાયક છે પોતે ગુણવાન છે. इस स्टोरी में जो हीरो है यानी नायक है वो शक्ति कुमार नाम है उसका. वो गुणी है, उसमें वो सारे गुण है. Hence he wants to marry a girl having good qualities similar to him. So वो ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता है जिसकी क्वालिटीज़ भी उसकी क्वालिटीज़ के साथ मैच होती हो, સમાન હોતી હો. તેથી તે પોતાના જેવી ગુણવતી કન્યાને પરણવા ચાહે છે, પરણવા માંગે છે. He has made a plan to find out a qualitative girl of his own choice. So उसने एक प्लान बनाया है कि वो अपने जैसे गुणों वाली लड़की को कैसे सिलेक्ट करे. सो उसने एक प्लान बनाया है. પોતાના જેવા ગુણો કોઈ કન્યામાં છે કે નહીં તે શોધી કાઢવા માટે તેણે એક યોજના વિચારી છે. As per his plan, a girl who can prepare and feed virtuous food items from only one prasth, just 2 કિલો, about 2 કિલો જેવું. One prasth paddy is a virtuous girl. उसने जो योजना सोची हुई है उस मुजब जो लड़की ओनली वन प्रस्थ डांगर, जस्ट एक पैडी आता है उसमें से विविध आइटम्स बना सके और उसको खाने के लिए दे सके वही अच्छी है, क्वालिटेटिव गर्ल है, वो ऐसा सोचता है. જે યોજના એને વિચારી છે તે મુજબ જે કન્યા માત્ર એક પ્રસ્થ ડાંગરમાંથી વિવિધ વાનગીઓ બનાવી જમાડી શકે તે ગુણવતી છે એમ સમજવું. વન પ્રસ્થ यानी 2 kg. After finding such a girl, he would put a proposal marriage and if she agrees, he will marry her. એ પછી આવી કન્યાની સામે વિવાહનો પ્રસ્તાવ કરી જો તે સંમત થાય તો તેની સાથે લગ્ન કરશે. जस्ट वो सोचता है कि अगर मेरी ये कंडीशन, अगर कोई लड़की कंडीशन में पास हो जाती है तो मैं उसके सामने विवाह का यानी शादी का प्रस्ताव रखूंगा और वो हाँ कहती है, वो एग्री होती है तो उसके साथ मैं शादी करूंगा. अभी आगे देखते हैं. शक्ति कुमार, who was moving in different countries in search of a virtuous girl, finds one girl living in Kanchinagar situated on the bank of river Kaveri. ગુણવતી કન્યાને મેળવવા માટે દેશ વિદેશમાં ભ્રમણ કરી રહેલા શક્તિકુમારને કાવેરી નદીના કાંઠે વસેલા કાંચીનગરમાં આવી એક કન્યા મળી આવે છે. अपने गुणों के सिमिलर एक लड़की को ढूंढने के लिए जो शक्ति कुमार है वो देश विदेश में घूमता है. उसके बाद उसको कावेरी नदी के बैंक पे, वो किनारे पे एक गांव है कांचीनगर करके, वहाँ पे एक लड़की ऐसी दिखाई देती है. The girl, using her extraordinary intellect, prepares various food items and pleases Shakti Kumar by feeding him those items with love. वो लड़की ओनली वन प्रस्थ डांगर यानी वो जो पैडी था उसमें से अपनी बुद्धि प्रतिभा से अलग अलग चीज़ें तैयार करती है और वो जो आइटम्स बनी होती है, चीज़ें बनी होती है, उसको शक्ति कुमार को प्यार से खिलाती है और उसको खुश कर देती है. હવે જે કન્યા એને મળી હતી, કન્યા માત્ર એક પ્રસ્થ ડાંગરમાંથી પોતાની બુદ્ધિ પ્રતિભાના બળે વિવિધ વાનગીઓ તૈયાર કરે છે અને તે વાનગીઓને પ્રેમપૂર્વક શક્તિકુમારને જમાડીને પ્રસન્ન કરી દે છે. Thus the girl succeeds in the test. આવી રીતે એક્ઝામમાં આ જે છોકરી છે એ પાસ થઈ જાય છે. वो लड़की यहाँ पे पास हो जाती है. Shakti Kumar puts a proposal of marriage and marries her after her consent. શક્તિ કુમાર છે એ તે છોકરીને, તે કન્યા સામે વિવાહનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે. કન્યા હા પાડે છે અને તેની સંમતિથી કન્યાનો શક્તિ કુમાર જોડે વિવાહ થાય છે. शक्ति कुमार वो उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है. वो एग्ज़ाम में पास हो गई थी, शक्ति कुमार के थ्रू जो एग्ज़ाम ली गई थी, तो वो कन्या को प्रपोज करता है. वो लड़की है वो एक्सेप्ट करती है उसकी प्रपोजल और उसकी सम्मति से उसके साथ शादी कर लेती है. The moral of the story is that in spite of want of things, a good person
with excellent skill can get desired happiness. Active past participles used in these lessons are also to be noted. આ કથા શીખવે છે કે સાધનો ઓછા હોય તો પણ ગુણવાન માણસ પોતાની બુદ્ધિ પ્રતિભાથી પોતાની ઈચ્છા મુજબનું સુખ મેળવી શકે છે. जैसे यहाँ पे जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि अगर साधन सामग्री बहुत कम है फिर भी जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो अपनी बुद्धि प्रतिभा से अपनी इच्छा के मुताबिक खाना पका ही लेता है. उसको जो चाहिए वो ले ही लेता है अगर उसके पास दिमाग है अच्छे से तो. અહીં આવતા कर्तरी भूत कृदंतना रूपों ध्यान में लेवाना છે. અહીં जस्ट इस लेसन में ना फिर आपको एग्जाम में जो काम में आता है वो सब यहाँ पे कर्तरी के रूप में है, कर्तरी भूत कृदंत, तो वो आपको देखने होते हैं. सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे. शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं तो देन हमें इजी रहती है ये स्टोरी समझने में, क्वेश्चन आंसर्स में, सब में. तो पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं. श्रेष्ठी पुत्र, सन ऑफ अ मर्चेंट यानी વેપારીનો દીકરો, સાહુકારનો દીકરો. દારાહા વાઇફ, यहाँ पे તંડુલહ રાઈસ ગ્રેન્સ એટલે ચોખા, રાઈસ. તુસહ હસ્ક ઓફ ગ્રેન્સ એટલે અનાજનું ફોતરું, ઘઉંમાં ચોખામાં ફોતરા જેવું થોડું આવે છે એ હસ્ક ઓફ ગ્રેન્સ. આતપહ સનશાઇન એટલે તડકો. સ્વર્ણકારહ ગોલ્ડ સ્મિથ એટલે સોની. કૃષ્ણાકરહ કોલસો. પ્રસ્તાવહ પ્રપોઝલ. ભાર્યાહ વાઇફ, દારા વાઇફ, ભાર્યા વાઇફ સમાનાર્થી શબ્દ થઈ જાય છે. સંમતિ પરમિશન, કન્સન્ટ. સાલિહી પેડી, જસ્ટ એક પેડી નામનું ડાંગર જેવું આવે છે, ડાંગર, એને પેડી કહેવાય છે. ધાત્રી નર્સ, અહીંયા ધાત્રી એટલે નર્સ, પણ આ જે ચેપ્ટરમાં છે એમાં દાસીનો એટલે સેવિકા, દાસી એ રીતનો અર્થ થાય છે. કાંચીનગર એન્શિયન્ટ સિટી ઓર ટાઉન સિચ્યુએટેડ ઇન સાઉથ ઇન્ડિયા, દક્ષિણ ભારતમાં આવેલું એક પ્રાચીન નગર, દક્ષિણ ભારતનું છે આ કાંચીનગર. કૌશલમ સ્કિલ, ક્લેવરનેસ. ધાન્યમ ગ્રેન, કાષ્ઠમ વુડ, ઇંધનમ ફ્યુઅલ યાની અગ્નિ, જે પોતાનું જેનામાં બનાવે છે બળતણ, ગેસ જેવું. શાકમ વેજીટેબલ. ધૃતમ ઘી. દધી દહીં, દધી कर्ड यानी दही. व्यंजनम तो फूड आइटम. अभी हम प्रोनाउन देखते हैं. एकह तो वन, एक. तस्या हर, एताम टू दिस, ताम टू हर, ते योर, अनेन बाय और विथ दिस, सा सी, तान टू धेम, तस्मात फ्रॉम इट, तेन बाय हिम, तस्मै फॉर हिम, तस्मिन इन इट, तया बाय हर. ये ना आपको क्वेश्चन आंसर्स में बहुत इजी पड़ते हैं और संस्कृत का इंग्लिश वर्ड बनाने में वो उसमें ये काम आते हैं, तो ये प्रोनाउंस एक बार देख लेना ज़रूरी है. अभी हम एडजेक्टिव देखते हैं. स्वकीयस्य जीवनस्य ऑफ वन्स ओवन, પોતાના જીવનનું. દ્વાવિશતિતમે વર્ષે ઇન ધ 22nd એટલે જસ્ટ પોતાના 22મા વર્ષે શક્તિકુમાર લગ્ન માટેનું વિચારે છે, પ્રવેશે 22મા વર્ષમાં ત્યારે, એટલે એ વર્ષનું તો 22મા વર્ષે. ગુણવતીમ ભાર્યામ એટલે ગુણવાળી પત્નીને. ટુ વર્ચ્યુઅસ હેવિંગ ગુડ ક્વોલિટીઝ. વિરલ ભૂષણામ એકામ કુમારીમ, ટુ વન હેવિંગ લેસ ઓર્નામેન્ટ્સ. જસ્ટ આછા ઘરેણાવાળી એક કન્યા, આછા એટલે ઓછા ઘરેણાવાળી એક કન્યાને જોવે છે. વિરલ ભૂષણ એટલે શણગાર જેનો છે, વિરલ ભૂષણ એ. સંપન્નમ આહારમ કુકડ પ્રિપેર્ડ મીલ, તૈયાર થયેલું ભોજન. પ્રસ્થમાત્રમ ધાન્યમ જસ્ટ વન પ્રસ્થ, રાઉન્ડ અબાઉટ 2 કિલોગ્રામ ગેઇન, જસ્ટ અંદાજે 2 કિલો જેટલી ડાંગર. એક જ પ્રસ્થ 2 કિલો જેટલી છે. પ્રસ્થમ એટલે ડાંગર, 2 કિલો જેટલી.
बुद्धिमती, हाईली इंटेलिजेंट. समायाम, परिशुद्धायाम भूमौ, ऑन लेवल्ड एंड क्लीन ग्राउंड સોઇલ. સમતલ, એક સાથે સમાંતર સિમિલર અને ચોખ્ખી જમીન ઉપર. ઉષ્ણીકૃતે જલે, ઇન હોટ વોટર. અલ્પીયસા કાલેન, વિધિન શોર્ટ ટાઈમ એટલે કે થોડાક જ વખતમાં. સંપન્ને આહારે, વેન ફૂડ વોઝ પ્રિપેર્ડ. સ્નાન શુદ્ધાય તસ્મે અતિથયે, ટુ ધેટ ગેસ્ટ હુ હેડ ટેકન બાથ યાની સ્નાનથી બાથથી શુદ્ધ થયેલા મહેમાનને. વિવિધાનામ પદાર્થાનમ ઓફ વેરિયસ ફૂડ આઇટમ્સ, જસ્ટ અનેક જાતના પદાર્થોનું જશે બનાવે છે. પ્રસ્થ પરિમિતેન ધાન્યેન, વિથ મિસ્યોરિંગ વન પ્રસ્થ, માત્ર એક પ્રસ્થ જેટલા અનાજથી. હવે એડવર્બ જોઈ લઈએ. યદા, વેન. તદા, ધેન. એકદા, વન્સ, વન ડે. નિક્ષા, નિયર. ઓમિતિ, સેઇંગ ઓમ, યસ. Word Om in Sanskrit language conveys the meaning of acceptance. Yes, askrut, very often. अभी हम समास देखते हैं. देखिए समास में ना तो ऐसे एग्जाम के इसमें से ही करने, कोई एक्स्ट्रा करने नहीं है कि भाई ज़्यादा जो डाइजेस्ट में देते हैं वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं नहीं प्रीफर करती हूँ और एग्ज़ाम में ऐसे बाहर से पूछाते भी नहीं है, इसमें से ही कर लेने होते हैं. तो आप यही इसमें से ही कर लो. श्रेष्ठी पुत्र, श्रेष्ठीन पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष. एक नया वाला आता है वही अलग करना है, बाकी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें से ही करने होते हैं. दार विहीनानाम, तो उसका तत्पुरुष. अनुरूप गुण दाराणाम, तो यहाँ पे न अनुरूपम नय तत्पुरुष आता है, ये ध्यान रखना है. नय वाले आते हैं न अनुरूपम नय तत्पुरुष, फिर उसका होता है अनुरूपम गुणाः यस्याः सा. अनुरूप गुणाः बहुव्रीहि, बहुव्रीहि भी आता है, नए तत्पुरुष भी आता है. हर शब्द को अलग 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 यहाँ पे किया गया है. वस्त्रांते, उसका अलग किया हुआ है. वस्त्रस्य अंतः तस्मिन, यहाँ पे ना वो जो कंपाउंड है उसको अलग नहीं करना है, बस वो कौन सा समास आता है वही आपको देखना है. मोस्टली षष्ठी तत्पुरुष आता है, उसका एक वीडियो मैं बना दूंगी. बहुव्रीहि बहुत ईजी है पहचानने का. कर्मधारय और नए तत्पुरुष भी बहुत कम आते हैं, द्वंद्व भी बहुत कम आते हैं. पिनद्दशालिः, बहुव्रीहि. पिनद्दशाली येन सह. द्वार ग्रहणाय, षष्ठी तत्पुरुष. कावेरी तीर पत्तने, वो भी षष्ठी तत्पुरुष. यहाँ पे उसको डिवाइड किया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा. विरल भूषणाम, बहुव्रीहि. रूप संपदा, षष्ठी तत्पुरुष. विवाह प्रस्तावम, षष्ठी तत्पुरुष. शाली प्रस्थेन, षष्ठी तत्पुरुष. स्वगृहम, षष्ठी तत्पुरुष. प्रक्षालित पादम, बहुव्रीहि. कृष्णांग्रान, कर्मधारय. धात्री मुखेन, षष्ठी तत्पुरुष. स्नान शुद्धाय, तृतीया तत्पुरुष. पेयोपाहार पूर्वम, पेयस्य उपाहारः, षष्ठी तत्पुरुष. बहुव्रीहि भी आता है, एक बार आप देख लो. पेयोपाहारः पूर्वः यस्य तद. धृत सहितौ ददम, तृतीया तत्पुरुष यहाँ पे है. कर्मधारय भी है. भोजन रुचिम, भोजने रुचि ही, सप्तमी तत्पुरुष. गुण संपदा, षष्ठी तत्पुरुष. प्रस्थ परिमितेन, तृतीया तत्पुरुष. स्वनगर, स्वस्य नगरम, षष्ठी तत्पुरुष. अभी हम पार्टिसिपल देख लेते हैं. देखो यहाँ पे कृदंत भी आपको दिए गए हुए, वो भी यहाँ से पूछा है. एग्जाम में एक्स्ट्रा डाइजेस्ट के या ऐसे ऐसे कोई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से देख लोगे तो अच्छा रहेगा. संबंधक भ्रुत कृदंत में उक्त्वा, पीछे त्वा आता है तो सेइंग, टॉकिंग. आदाय, एक्वायरिंग, जस्ट ग्रहण करવું, લેવું. સંપ્રાય, ટેકિંગ, वो भी प्राप्त કરવું, ટેકિંગ લેવું એ જ છે. આદાય બી જસ્ટ લેવું, ગ્રહણ કરવું. સમયિત્વા, એક્સટિંગ્યુશિંગ, જસ્ટ ઠારીને, બુઝાવીને, યાની બંધ કરી દીધો. જેણે અગ્નિ બુઝાવ્યો તો એ બંધ કરી દીધો એ.
प्रेषयित्वा सेंडिंग मोकलीने, प्रविष्ट जो पीछे आता है स्टह वो कर्मणि भूत कृदंत होता है, एंटर प्रविष्ट एंटर, आपन्न फॉलन इनटू, जस्ट प्राप्त થયેલો, ફોલન આપન ઇન્ટુ એટલે પ્રાપ્ત થવું, મળવું. સમાગત અરાઇવ્ડ આવી પહોંચેલો. અભિભૂત ડિફીટેડ એટલે હારેલો, અભિભૂત હારવું, ડિફીટેડ. કૃતા તો ડીડ કરેલું. સમાકૃષ્ટ લ્યુઅર્ડ. આકૃષ્ટમ એટ્રેક્ટેડ આકર્ષિત થયેલો. તપ્તવતી હિટેડ યાની તપાવ્યા. ઉક્તવતી સેડ સ્પોક બોલવું, બોલના. निवेदिवते इन्फॉर्म यानी जस्ट इन्फॉर्म किया. प्रक्षालितवती वॉश्ड क्लीन धोયું. प्रक्षिप्तवती थ्रू पुट यानी મૂક્યું, નાખ્યું. कृतवती બોટ ખરીદ્યું, જસ્ટ બાયનું બોટ. સંપાદિતવતી પ્રિપેર્ડ એટલે તૈયાર કર્યું. વર્ધિતવતી મેડ પ્રિપેર્ડ यानी બનાવ્યું. विरचितवती जस्ट मेड कंपोज्ड दोनों सेम है. मेड बनाव्યું, રચાવ્યું, કર્યું. समाकृष्ट खींचाયેલો. ल्यूअर्ड जस्ट समाकृष्ट हमने आगे देखा, समाकृष्ट ल्यूअर्ड यानी ખેંચાયેલો, આકર્ષાયેલો. कृतवान डीड करेलू, કર્યું. भोजई तुम पीछे हेतुअर्थ कृदंत में तुम वाले वर्ड्स आते हैं, तो हेतुअर्थ कृदंत है भोजई तुम, टू मेक वन ईट जस्ट જમાડવા માટે. વિક્રેતુમ ફોર સેલિંગ વેચવા માટે. સ્નાતુમ ફોર બાથિંગ સ્નાન કરવા માટે. अभी हमें यहाँ पे रूट देख लेते हैं. प्रति प्लस वस प्रतिवस्ती टू स्टे टू लिव રહેવું. ભ્રમતી ભ્રમ ટુ વેન્ડર ટુ મૂવ બધે ફરવું. ઉદ્વહતી ઉત પ્લસ વહ ટુ મેરી એટલે મેરેજ કરવા, વિવાહ કરવા. નયતી ની ટુ ટેક ટુ લીડ લઈ જવું. મિલતી ટુ મીટ મળવું. વિંદતે ટુ ઓબ્ટેન ટુ ગેઇન એટલે પ્રાપ્ત કરવું. ચિંત ચિંતયતી એનું મૂળ છે ચિંત, તો ટુ થિંક એટલે વિચારવું. घटयती टू रब घसવું. अभी हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं. ચિંતામાપન્નઃ સ્ટાર્ટેડ વરીંગ ચિંતામાં આવી પડ્યો. અનનુરૂપ ગુણ ધારાણામ ટુ ધોઝ હેવિંગ વાઇફ ડિવોઇડ ઓફ સ્યુટેબલ વર્ચ્યુઅસ. જસ્ટ અનુરૂપ એટલે કે મેચિંગ સિમિલર ગુણ વગરની પત્નીવાળાઓને. વિંદેયમ આઈ મે ગેટ હું પ્રાપ્ત કરું. પ્રભુત્તમ વિચાર્ય હેવિંગ થોટ ડીપલી જસ્ટ ડીપલી વિચારીને એટલે કે ઘણું બધું વિચારીને. વસ્ત્રાંતે એટ ધ એન્ડ ઓફ ક્લોથ્સ કપડામાં છેડે કપડાના છેડે. પિનદ્ધ સાલિહી હી હુ હેઝ ટાઈડ પેડી કપડાના છેડે ડાંગર બાંધી છે એટલે ડાંગરનો જે બાંધેલો છે છેડો એ આવે એ. દાર ગ્રહણાય ટુ ગેટ એ વાઇફ પત્નીને મેળવવા માટે. રૂપ સંપદા ભીભૂત ઇમ્પ્રેસ્ડ બાય પ્રોસ્પરિટી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ બ્યુટી. રૂપ સંપત્તિથી એટ્રેક્ટ થઈ ગયેલો, અંજાઈ ગયેલો. તદેતામ સો હર તેથી તેની સાથે. સત્યામ સંમતો ઇફ સી એગ્રીઝ અગર જો તે સંમત થાય તો, એગ્રી કરે તો. એનામ ઉદ્વહામી આઈ વિલ મેરી હર એને પરણીશ. આ સ્પોક એટલે જસ્ટ બોલ્યો. સાલી પ્રસ્થેન વિથ વન પ્રસ્થા પેઢી એક પ્રસ્થ જેટલી ડાંગરથી એટલે કે 2 કિલો જેટલી ડાંગરથી. ઓમિતિ ઉક્તવા
સેઇંગ ઓમ, એક્સેપ્ટિંગ, ઓમ એમ કહીને સ્વીકૃતિ આપી એટલે કે મંજૂરી આપી. આતપે તપ્તવતી, હીટેડ ઇન સનશાઇન, જસ્ટ તડકામાં તપાવ્યા. તાન અધ ઘટયત, રૂબેડ ગ્રેઇન્ડ ઇટ, જસ્ટ એને ઘસ્યું, ખાંડ્યું, એના છોતરાને ડાંગરને અલગ પાડવા માટેનું એ. માર્જનાર્થમ, ટુ ક્લીન, ટુ વોશ, સાફ કર્યું, ધોયા, તો સાફ કરવા માટે, ધોવા માટે. ધાત્રી મુક્તવતી, સેડ ટુ વેટ નર્સ, જેમાં નર્સને, સેવિકાને, દાસીને કહ્યું. આહર, બ્રિંગ, લઈ આવો. જલેન પ્રક્ષાલિતવતી, એટલે વોશ વિથ વોટર, પાણીથી ધોયા, પાણીથી સાફ કર્યા. સિદ્ધાહ સજતા, એટલે વેર કુકડ, એટલે કે તૈયાર થઈ ગયા. ઇંધનાની સમયિત્વા, એટલે કે એક્સટિટ્યુસિંગ વુડ, ધાત્રીના સોરી શું થયું છે, ઇંધનાની લાકડાને ઠારવું ઠંડક કર્યા, એનું ગરમ હતા એને ઠંડા કર્યા. તો ઇંધનાની સમયિત્વા એક્સટિટ્યુસિંગ વુડ. કૃષ્ણાંગરાન, ટુ કોલ્સ, એટલે કોલસો. તદર્થિભ્યઃ, ફોર ધીસ હુ નીડ ઇટ, જેને જરૂર છે તેને આપી દઉં, જરૂરિયાતવાળાને. ધાત્રી મુખેન, થ્રો વેટ નર્સ, ધાત્રી મારફતે, પેલા ધાત્રીના મોઢાથી. પેયોપાહાર પૂર્વમ, વિથ ડ્રિંક્સ એન્ડ સ્નેક્સ, નાસ્તા અને પીણા કોલ્ડ ડ્રિંક્સ સાથેનું એટલે પીવાનું. ધૃત સહિતૌ દનમ, રાઈસ કુકડ વિથ ઘી, ઘી સાથેના ભાતને. ભુક્તે તુ તસ્મિન અતિથૌ, વેન ધ ગેસ્ટ કમ્પ્લીટેડ હિઝ મીલ, જ્યારે મહેમાન જમી રહ્યા હોય ત્યારે. વ્યંજનાની, ફૂડ આઇટમ્સ, એટલે વાનગીઓને. તાંબુલસ્યાપી, જસ્ટ ઓલ્સો ઓફ અ બેટલ, પાનની, તાંબુલની પાનની પણ ગુણરૂપી સંપત્તિથી કન્યા પ્રત્યે જસ્ટ પ્રેમથી જોવાનું. ગુણ સંપદા, વિથ રિચનેસ ઓફ ક્વોલિટીઝ, જે છોકરી હતી જે ફૂડ બનાવે છે એની ક્વોલિટીઝની રિચનેસથી. કન્યામ પ્રતિ, ટુવર્ડ્સ ગર્લ, કન્યાની સામે. કન્યયા સ્વીકૃતે પ્રસ્તાવે, કન્યા વેન ધ ગર્લ એક્સેપ્ટેડ ધ પ્રપોઝલ, કન્યાએ જ્યારે પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કર્યો. વિધિવત, એકોર્ડિંગ ટુ રાઇટ્સ, એટલે વિધિ મુજબ, કાયદેસર. ઉપયમ્ય, મેરીઇંગ, એટલે વિવાહ કરીને. जस्ट ये लास्ट में जो होता है गुण रूपी સંપત્તિથી કન્યા પ્રત્યે આકર્ષાયેલો તે માણસ જે શક્તિકુમાર છે એને પ્રપોઝ કરે છે અને આ કન્યા એનો સ્વીકાર કરે છે એટલે વિધિવત એ લોકોના મેરેજ થાય છે. એ વસ્તુ છે અહીંયા. હવે આપણે સંધિ જોઈ લઈએ. શક્તિકુમારો નામ, તો શક્તિકુમાર નામ. સ યદા, તો સહ યદા. प्रविष्ट स्तदा, तो प्रविष्ट प्लस तदा. सो ड का उच्चार नहीं करना है. सो चिंतयत, तो सह अचिंतयत. सताम, तो सहताम. जो सतम वाला आता है सयदा, तो सह स के बाद दो हमें चिन्ह कर देते हो, पॉइंट करते हैं. और जो ये सोई चिंतम है तो जो ड वाला है उसके पहले जो होता है उसको ऐसे सह कर देते हैं और पीछे अचिंतयत. तुसेभ्यस्तण्डुलाः, तुसेभ्यः तण्डुलाः. काले नैव, कालेन प्लस एव. व्यंजन च, व्यंजन अने. આવી રીતે यहाँ. तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का हमने कंप्लीट किया है. अभी हम स्वाध्याय और उसका ट्रांसलेशन देखते हैं. तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 संस्कृत का, गुणवती कन्या.
इसके पहले के चारों वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे रख दूँगी। जैसे आगे वीडियो में है गुजराती, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश 4 लैंग्वेज होती है। संस्कृत का जो टेक्स्ट बुक में है वहाँ से मैं रीड करूँगी और इंग्लिश में, गुजराती में यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा हुआ है और हिंदी में समझ आ जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। काञ्चीनगरे शक्तिकुमारो नाम एकः श्रेष्ठपुत्रः प्रतिवसति स्म। There lived in a city called Kanchi the son of a merchant named શક્તિકુમાર. કાંચીનગરમાં એક શેઠનો શક્તિકુમાર નામનો पुत्र रहतो હતો. जस्ट कांचीनगर करके एक गांव है, उसमें एक सेठ का, एक व्यापारी का शक्ति कुमार नामक पुत्र रहता था. स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्टस्तदा चिन्तामापन्नः. When he entered the 22 years of his life, he became worried and thinking. તે જ્યારે પોતાના જીવનના 22મા વર્ષમાં પ્રવેશ્યો ત્યારે ચિંતિત થયો. जब उसका 22 यानी 22वां बर्थडे आया और उसमें एंटर हुआ तो उसका थोड़ा सा टेंशन हुआ, चिंता हुई थोड़ी सी. नास्ति दार विहीनानां अनुरूप गुणधाराणां च सुखम. Those who have no wife and those whose wife devoid of suitable virtues don't become happy. પત્ની વગરનાને અને અનુકૂળ ગુણ વગરની પત્નીવાળાઓને સુખ હોતું નથી. जो जिसके पास पत्नी नहीं है वो और जिसके पास अच्छे गुणों वाली यानी उसके गुण के सिमिलर गुण वाली पत्नी नहीं है, उनको कोई सुख होता नहीं है. तत्कथम गुणवतीं भार्याम् अहम विन्देयमिति. So how can I get a virtuous wife? तो હું કેવી રીતે ગુણવતી પત્ની प्राप्त करूँ? तो मैं कैसे अच्छी सी गुणों वाली पत्नी प्राप्त करूँ, मैं अचीव करूँ, उसको पालूँ. ततः सः प्रभुतं विचार्य वस्त्रान्ते पिनद्धशालिः दारग्रहणाय विविधान् देशान् अभ्रमत्. Then thinking deeply, he wandered at various places with paddy tied at the hem of his garment to get a wife. જસ यहाँ पे પછી તે ખૂબ વિચારીને કપડાના છેડે, પોતાનું જે કપડાં પહેર્યું એના છેડે ડાંગર બાંધીને પત્ની મેળવવા માટે જુદા જુદા દેશમાં ફર્યો. બધું विचारीने अच्छी सी पत्नी उसको चाहिए, सो वो बहुत सोच समझ के फिर अपने जो कपड़े उसने पहने थे उसके लास्ट पार्ट पे, छेड़े पे डांगर, एक प्रस्थ आता है जो 2 किलो का होता है अराउंड, उसको बांध के वो अपनी पत्नी को लेने के लिए, अच्छी सी पत्नी को लेने के लिए अलग अलग देशों में घूमता है. एकदा स कावेरी तीरपत्तने समागतः. Once he came to a city on the bank of the river Kaveri. એકવાર તે કાવેરી નદીના કાંઠે આવેલા નગરમાં આવ્યો. एक बार वो कावेरी नदी के कांठे पे, किनारे पे जो नगर होता है वहाँ पे वो आया. अतः सह कूपे विरलभूषणां कुमारी मेकाम् अपश्यत. Here he saw a young girl wearing lace ornaments near the well. અહીં એણે એટલે કે ઓછા આભૂષણોવાળી એક કન્યાને કૂવા પર જોઈ. यहाँ पे उसने कम ऑर्नामेंट्स पहने हुए एक लड़की को, कन्या को यहाँ पे उसने कुएं पे देखा, वेल पे देखा. तस्याः रूपसम्पदाभिभूतः सोचिन्तयत्. आकृष्टं मे हृदयम् अस्याम्. He who was overpowered by the wealth of her beauty thought. જસ્ટ એના રૂપથી અંજાયેલા તેણે વિચાર્યું. એ ઓછા ઘરેણાવાળી સારી છોકરી હતી તો એના તે રૂપથી એ અંજાઈ ગયો એટલે વિચાર્યું એણે. उसके ब्यूटी से वो सरप्राइज हो गया और उसने सोचा. तदेतां परीक्ष्य विवाह प्रस्तावं कृत्वा तस्यां सम्मतो उद्धामि. My mind
is attracted to this girl. So tasting her and making her a proposal, I will marry her if she agrees. મારું મન આમાં આકર્ષાયેલું છે, તો એની પરીક્ષા કરીને વિવાહનો પ્રસ્તાવ મૂકીને જો સંમતિ આપે તો હું લગ્ન કરીશ. वो सोच रहा है कि अब मेरा मेरा मन उस लड़की के प्रति थोड़ा सा आकर्षायला है, मीन्स अट्रैक्ट हुआ है. तो मैं इसके एग्ज़ाम लेता हूँ. अगर वो पास होती है तो मैं उसके सामने शादी का प्रपोज़ल रखूँगा, और अगर वो सम्मति देती है, एग्री होती है, तो उसके साथ में शादी कर लूँगा. स तां निकषा संगत्य सविनयम् आह अस्ति ते कौशलं शालिप्रस्थेन अनेन सम्पन्नामाहारं मा भोजयितुम्. Approaching her politely, he said, "Do you have a skill to feed me with sumptuous food prepared with this one pressed paddy?" તે તેની પાસે જઈને વિનયપૂર્વક બોલે છે, "શું તારામાં આ એક પ્રસ્ત ડાંગર વડે ભોજન બનાવીને મને જમાડવાની કુશળતા છે?" वो सोच के उसके पास जाता है और वेरी हम्बली उसको बोलता है, "सो आप मैं ये एक प्रस्त डांगर यानी 2 केजी डांगर से खाना बनाने से और उससे मुझे खिलाने के लिए इनकी जो अवेलेबलता है, कुशलता है." ततः सा ओमिति उक्त्वा प्रस्थमात्रं धान्यमादाय श्रेष्ठीपुत्रस्य याचानुसारं कर्तुप्रवृत्तः. Saying yes and taking only one pressed paddy, she proceeded to do as he had asked her. પછી તે છોકરી હા એમ બોલીને એક પ્રસ્ત જેટલું ધાન્ય લઈને શેઠના પુત્રની માંગણી પ્રમાણે કરવા તૈયાર થઈ. अब उसने जो बोला कि हाँ भाई ये सब लेके तुम मेरे लिए भोजन बना सकती हो, वो लड़की ने हाँ बोला, और उसके पास जो था वो प्रस्थ पेड़ी उसने ले लिया लड़की ने, और वो लड़के शक्ति कुमार की इच्छा उसने जो कहा वो इच्छा प्रमाणे वो करने के लिए तैयार हो गई. ततः आदौ सा बुद्धिमती कन्या तान शालीन प्रथमम् आतपे तप्तवती. Then first that intelligent girl heated the paddy in the sun. પછી તે बुद्धिशाली कन्याए તે डांगर ने पहला तड़का में तपावी. पहले उसने वो डांगर को सन रेज में उसको गर्म करने के लिए रखी. ततः समायां परिशुद्धायां भूमौ तान अघटयत. Then she ground them on the flat or even ground. પછી સમતળ અને ચોખ્ખી જમીન પર તેને ખાંડી. उसके बाद अच्छी सी ज़मीन पे और एक सिमिलर ज़मीन पे उसको खानने के लिए रखा. अनेन तुसेभ्यस्तण्डुलाः पृथक्कः सज्जताः. As a result of this, the rice grains were separated from the husk. આથી ફોતરામાંથી ચોખા જુદા પડ્યા. ડાંગરમાંથી એણે તડકામાં તપાવ્યું અને પછી એને જમીન પર રગદોળી ખાંડી, એટલે ફોતરામાંથી ચોખા જુદા પડ્યા. ये ऐसे करने से वो जो हस्क होते उसमें से राइस अलग हो गए. टंडुलान संप्राय सा तुषान भूषाणां मार्जनार्थं स्वर्णकाराय विक्रेतुं धात्रीम् अकथयत. Having obtained the rice grains, she told the elderly nurse to sell the husk to the goldsmith for cleaning the ornaments. ચોખા મેળવીને તેણે તે ફોતરાને આભૂષણો સાફ કરવા માટે સોનીને વેચવા માટે દાસીને કહ્યું. उसने जो ऐसी प्रोसेस की, उसके बाद उसने जो राइस ले लिए, यानी जो कच्चे राइस थे वो ले लिए, और उसके हस्क को सोनी को देने के लिए अपनी दासी को बोला. जो सोनी इसका यूज़ वो ऑर्नामेंट से उसको साफ करने के लिए करता है. तस्मात् यत् धनं मिलति तेन काष्ठानि आहर इति च धात्रीं निवेदितवती. She told the elderly nurse to bring firewood with the money she would get. તેમાંથી જે ધન મળે તેનાથી લાકડા લઈ આવજે, એમ પણ દાસીને તેણે કહ્યું. वो जो हस्क है वो सोनी को करेगी सेल, तो उसके बदले में जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से उसने बोला कि लकड़ियाँ लेके आए. धात्री काष्ठानी आनीतवती. द एल्डरली नर्स ब्राउड द वुड. दासी लाकड़ा ले आई. जो सेविका थी उसको उसने बोला था पैसों से लकड़ी लेके आना, तो वो लकड़ी लेके आई. तदंतरम सा टंडुलान अस्कृत जलेन प्रक्षालितवती. उष्णीकृते जले च तान प्रक्षिप्तवती. Then she washed the rice grains,
many times and put them in the hot water. આ પછી તેને ચોખાને વારંવાર પાણીથી ધોયા અને ગરમ પાણીમાં તેને નાખ્યા. वो जो लकड़ी लेके आई उसके बाद वो जो लड़की है उसने राइस को पानी से अच्छे से धोए और फिर हॉट वाटर में उसको डाल दिया. अल्पियसा कालेनेव टंडुलाः सिद्धाः सजताः. In a short time the rice were cooked. थोड़ा का समय में चोखा रंधाई गया. थोड़े से टाइम में वो राइस हुए वो तैयार हो गए, कुक हो गए. ततः इंधनानि जलेन समयित्वा कृष्णांगरानपि तदर्थिभ्यः प्रेषयित्वा यत् धनं लब्धं तेन धनेन साकं धृतं दधि तैलं च कृतवती. Then having extinguished burning places of wood with water and with whatever money she got by sending the coals to those who needed them, she bought vegetables, ghee, oil and curd. પછી જે લાકડાને ગરમ થયેલા તેને પાણીથી ઠારીને કોલસાને પણ તેની જરૂરિયાતવાળાને મોકલીને તેમાંથી જે ધન મળ્યું તેનાથી શાક, ઘી, દહીં અને તેલ ખરીદ્યા. वो जो उसने खाना बनाया था, लकड़ियों का यूज़ किया था, वो लकड़ियों को फिर उसने पानी से ठंडा कर दिया और उसकी जो कॉल्स मिलती है उसको भी जिसको उसकी ज़रूरत हो उसको भेज दिया और उसमें से जो पैसे मिले उसमें से उसने साग, सब्जी, घी, दही और तेल, ऑयल खरीदा. तेन च सा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती and with it she prepared various dishes. અને એનાથી તેને વિવિધ વાનગીઓ બનાવી. ऐसे ही इसने सब जो लिया परचेस किया उसमें से उसने अलग अलग चीज़ें बनाई. संपन्ने आहारे सा कन्या धात्री मुखेन अतिथये प्रथमं स्नातुं निवेदितवती. When the food was ready, the young girl asked the guest through the elderly nurse to take a bath. भोजन तैयार थता ते कन्याए दासी द्वारा अतिथि ने पहला स्नान करवा जणाव्યું. जब सारा भोजन तैयार हो गया तब वो लड़की ने दासी के अपनी सेविका के थ्रू वो जो शक्ति कुमार है उसको पहले स्नान लेने के लिए बोला. ततः स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये सा पेयोपहार पूर्वं भोजनं धृतसहितं ओदनं व्यञ्जनं च अयच्छत्. Then to the guest who had cleaned himself by taking bath, she gave rice and other dishes with ghee after first offering beverage and snacks. પછી સ્નાનથી શુદ્ધ થયેલા તે અતિથિને ઘી સહિતનો ભાત, નાસ્તો અને બીજી વાનગીઓ આપી. वो जो स्नान करके जो शक्ति कुमार आता है, शुद्ध होके आता है, तो उसके बाद वो लड़की ने शक्ति कुमार यानी अतिथि को घी के साथ का भात, राइस, अलग थोड़ा सा और नाश्ता और अलग सी थोड़ी सी चीज़ें दी खाने के लिए. मध्ये मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथे भोजन रुचिमपि अवर्धयत. In between the young girl even whetted the guest's desire for the meal by describing the various food items and other things. વચ્ચે વચ્ચે તે કન્યાએ ભોજનના વિવિધ પદાર્થોનું વર્ણન કરીને અતિથિની ભોજન रुचि પણ વધારી. यानी कि वो जो उसने जो खाना तैयार किया था तो वो बीच बीच में जो वो शक्ति कुमार खा रहा था तो बीच बीच में उसका कैसे बनाया, क्या है, वो उसका डिस्क्रिप्शन करके उसको खाने की रुचि भी बढ़ा रही थी. भुक्ते तु तस्मिन् अतिथौ तया ताम्बूलस्यापि व्यवस्था कृत्वा. When the guest had finished with the meal, the arrangement of a battle was also made by her. अतिथिए भोजन कर लिया, तेने पानी पर व्यवस्था करी. अतिथि ने खाना खा लिया, उसके बाद वो लड़की ने पान की भी व्यवस्था की हुई थी. एवं स्वकीयया गुण संपदा प्रस्थपरिमितेन धान्येन विविधानि व्यञ्जनानि विरचितवती कन्यां प्रति समाकृष्टः शक्तिकुमारः विवाहस्य प्रस्तावं कृतवान्. In this way, Shakti Kumar was attracted to the young girl, who prepared various dishes with only one prasth of paddy. Using her wealth of qualities, made a proposal of marriage. આમ પોતાના ગુણો દ્વારા એક પ્રસ્થ જેટલા અનાજથી વિવિધ વાનગીઓ બનાવતી કન્યા તરફ આકર્ષાયેલા શક્તિકુમારે વિવાહનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.
કન્યાએ પ્રસ્તાવ મૂક્યો. ऐसे ही एक ही प्रश्न पैडी से यानी डांगर राइस से लड़की ने अलग अलग आइटम्स बनाए और उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से किया, तो उससे वो शक्ति कुमार अट्रैक्ट हो गया और शक्ति कुमार ने लड़की को शादी के लिए प्रस्ताव रखा. कन्या स्वीकृते प्रस्तावे तां विधिवधू पयम्य स्वनगरं मनयत. When the proposal was accepted by the young girl, marrying her according to rites, Shakti Kumar took her to his own city. કન્યાએ પ્રસ્તાવનો સ્વીકાર કરતા તેની સાથે વિધિપૂર્વક વિવાહ કરીને પોતાના નગરમાં લઈ ગયો. जस्ट लड़की ने अच्छे से उसका जो लड़की ने सब डिस्क्रिप्ट किया था सब, तो ये जो शक्ति कुमार है वो बहुत अच्छे से उसको अच्छे से अट्रैक्ट हो गया और वो प्रपोज करता है लड़की को शादी के लिए. लड़की मान जाती है, तो देन लड़की को लेके वो अच्छे से विधि पूर्वक शादी करके उसको अपने घर ले जाता, अपने गांव ले जाता है. ये जस्ट एक फूल है. हाँ, तो ऐसे हमने यहाँ पे लेसन का ट्रांसलेशन सब कंप्लीट किया है. अब हम उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे टेक्स्ट बुक की और एक्स्ट्रा सब कुछ ले लिया है. फर्स्ट, अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत. फर्स्ट, कस्मिन् वर्षे प्रविष्टः शक्तिकुमारः चिन्तामापन्नः? ऑप्शन है क 22तमे, ख 20तमे, ग 21तमे, घ 24तमे. आंसर है, सही जवाब है क 22तमे यानी 22 में. सेकंड में, श्रेष्ठपुत्रः किमर्थं देशम् अभ्रमत? क धनार्जनार्थं, ख विद्याय ग्रहणाय, ग द्वार ग्रहणाय, ग धन ग्रहणाय. तो सही जवाब है ग दार ग्रहणाय. थर्ड, बुद्धिमती कन्या शालीन कुत्र तप्तवती? ऑप्शन है क अग्नौ, ख आतपे, ग चत्वरे, ग समानायाम भूमौ. सही जवाब है ख आतपे. 4, तुषान विक्रिय धात्री किम आनीतवती? ऑप्शन से क धृतम, ख काष्ठानि, ग जलम, ग शाकम. सही आंसर है ख काष्ठानि. 5, कन्या धात्रीमुखेन अतिथिं प्रथमं किम निवेदितवती? ऑप्शन है क प्रतीक्षा करणाय, ख आसन ग्रहणाय, ग भोजनाय, ग स्नानाय. सही जवाब है ग स्नानाय. 6, इंधनानि जलेन समयित्वा कन्या किम प्राप्तवती? ऑप्शन से क कृष्णांगारान्, ख काष्ठानि, ग जलम, ग शाकम. सही जवाब है क कृष्णांगारान्. 7, भोजनान्ते कन्यया कस्य व्यवस्था कृत्वा? ऑप्शन से क शयनस्य, ख ताम्बूलस्य, ग तक्रस्य, ग मिष्टान्नस्य. सही जवाब है ख ताम्बूलस्य. 8, कन्या विविधं व्यञ्जनं केन विरचितवती? ऑप्शन से क स्वकीयेन बुद्धिबलेन, ख कृतेन ईंधनेन, ग प्रस्थपरिमितेन धान्येन, ग स्वकीयेन धनेन. सही जवाब है ग प्रस्थपरिमितेन धान्येन. सेकंड, एक वाक्येन संस्कृत भाषाया उत्तरत. फर्स्ट, श्रेष्ठपुत्रस्य नाम किम आसीत्? आंसर है श्रेष्ठपुत्रस्य नाम शक्तिकुमारः आसीत्. सेकंड, देशान् भ्रमन् एकदा शक्तिकुमारः कुत्र समागतः? देशान् भ्रमन् एकदा शक्तिकुमारः कावेरीतीरपत्तने समागतः. थर्ड, शक्तिकुमारः विरलभूषणां कुमारीं कुत्र अपश्यतः? शक्तिकुमारः विरलभूषणा कुमारीं कूपे अपश्यत. 4, कन्या तण्डुलान् केन प्रक्षालितवती? कन्या तण्डुलान् जलेन प्रक्षालितवती. 5, भोज्यादीनां पदार्थां वर्णनं कृत्वा कन्या किं कृतवती? भोज्यादीनां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा कन्या अतिथेः भोजनरुचिं वर्धितवती. कृदन्तानां प्रकारं लिखत. ऑप्शन दिए हुए होते हैं आपको. इसका शॉर्टकट में बहुत जल्दी इसका वीडियो बना के रख दूंगी. फर्स्ट, प्रविष्ट, कर्तरी,
आकृष्टम कर्मणि भोजयितुं हेत्वर्थ उक्त्वा संबंधक आदाय संबंधक निवेदितवती कर्तरी संधि प्रविष्टस्तदा तो प्रविष्टः प्लस तदा सो चिंतयतः तो सह अचिंतयत आगे हमने देख लिए। थर्ड तुसेभ्यस्तंडुलाः तो तुसेभ्यः प्लस तंडुलाः व्यंजनचः व्यंजनम च प्लस च। समास के प्रकार दारविहीनानां तत्पुरुष समास द्रुत सहितम तत्पुरुष समास पिनद्दशालिः बहुव्रीहि समास विरल पुष्णाम बहुव्रीहि समास जो टेक्स्ट बुक के वही होते हैं। शाली प्रस्थेन तत्पुरुष समास कृष्णांगारान कर्मधारय समास गुण संपदा तत्पुरुष समास स्वनगरम तत्पुरुष समास। ये कोई काम का नहीं है पर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने ले लिया है यहाँ पे। उदाहरण अनुसार शब्द रूपम लिखत शब्द उसका मेन लिखना है, मेन वर्ब क्या है, उसका लिंग पहचानना है, विभक्ति कौन सी होती है और कौन सा वचन है। वचनात् तो मेन वर्ड है उसका वचन नपुंसकलिंगम पंचमी एक वचन। कांची नगरे तो कांची नगर नपुंसकलिंग सप्तमी एक वचन। जीवनस्य जीवन नपुंसकलिंग षष्ठी एक वचनम। भार्यां भार्या स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचनम। द्वार ग्रहणाय द्वार ग्रहण नपुंसकलिंगम चतुर्थी एक वचन। सम्मतो सम्मति स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन। अनेन तो इदम उसका मेन वर्ब है नपुंसकलिंग तृतीया एक वचन। अभी कोष्ठगत पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत हमें इससे सेंटेंसेस बनाने हैं। हमें इंग्लिश में सेंटेंस दिया है और संस्कृत में उसके वर्ड्स दिए हैं, उस पर से हमें ये सेंटेंसेस बना है। तो एक बार आप ना लेसन अच्छे से पढ़ोगे तो ही आपको ये अच्छे से आ जाएगा। फिर भी संस्कृत में टेक्स्ट बुक का ही पूछाते हैं तो चलेगा। अ मर्चेंट सन नेम शक्ति कुमार वॉज लिविंग तो श्रेष्ठी पुत्र शक्ति कुमार नी प्लस वस तो श्रेष्ठी पुत्र शक्ति कुमार निवसति स्म। At the well, he saw a girl having few ornaments. कुप एका विरल भूषण कुमारी 10 कुपे एका विरल भूषण कुमारी दृष्टा। ये जो मेन वर्ब होता है उसको हमने सेंटेंसेस के मुझे अनुरूप उसको अरेंज करना होता है। She took merchant son to her house. श्रेष्ठी पुत्र स्वगृह आ प्लस नी श्रेष्ठी गृहम स्वगृहम आनीतवती। Fourth, wealth is obtained through it. tat dhanam mila. तो तेन धनम मिलती। 5. I bring vegetable ghee and oil for money. धन शाक धृत तैलम च आप्लसनी धनेन शाकम धृतम तैलम च आनयामी। आलंग भाषायाम उत्तरम लिखत यानी आपकी जो मदर टंग है उसके ऊपर आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। इंग्लिश गुजराती वाले। तो फर्स्ट, what does Shakti Kumar think when he became 22 years old? When Shakti Kumar became 22 years old, he thought, men who have no wife with suitable qualities are not happy. So how can I find a virtuous wife? Second, what was Shakti Kumar's planning to taste an excellent girl? Shakti Kumar wanted to find a suitable bride for himself. According to his plan, a girl who could prepare and feed various food items from only one paddy would be a virtuous girl for him. Third, which things does the girl sell? What does she get in return? The girl dehusked the paddy. With the husk sold to the goldsmith, she got some money with which she bought firewood. Then she cooked the rice in the boiled water. When the rice was ready, she sprinkled water on the fire and sold the coal to the beggars. And with that money, she bought oil, vegetables, ghee, and curds. Then she prepared many food items. In what way did the girl increase Shakti Kumar's liking for meal?
When served the food items prepared by her to Shakti Kumar, she described the disease in an interesting manner. Her description made Shakti Kumar like every item. What attracted Shakti Kumar to propose the girl for marriage? Shakti Kumar's mind was already attracted by the girl's beauty, but when she passed the test of preparing many dishes with only one pressed paddy, he was impressed by her qualities. He noticed that she was frugal, expert in cooking as well as in conversation. She was courteous and had good manner. Her qualities convinced him that she would be an ideal housewife, so he proposed the girl for marriage. बी शॉर्ट नोट से 9th नंबर आलंग भाषायाम संक्षिप्त टिप्पणम लिखत फर्स्ट शक्ति कुमार's planning for taste. Shakti Kumar wanted to marry a virtuous girl who would make an ideal wife for him. He made a plan to taste the prospective bride. When he saw a young girl sitting at the well on the bank of the river Kaveri, he thought of implementing his plan. According to his plan, if the girl could make many food items with only one pressed paddy that he gave her and pleased him, she would be a right girl for him. Second, planning of the excellent girl. Shakti Kumar gave only one pressed paddy to the young girl and asked her for whether she had the skill to prepare a complete meal for him. With that, she accepted the challenge. She first dehusked the grains by heating them in the light of the sun and grinding them. She asked her attendant to sell the husk to the goldsmith and buy firewood with the money. Then she washed the rice grains and boiled them. She extinguished the fire and sold the coal to the beggars, and with that money she bought vegetables, oil, ghee, and curd. She prepared many dishes. She served them to Shakti Kumar, made him interested in them by describing each and every dish in an interesting manner. After the meal, she even offered a battle. अभी अनुवाद करना है 10 नंबर आंगल भाषायाम अनुवादम कुरुत यानी अपनी मध्य टंग में. फर्स्ट तत्कथम गुणवतीम भार्याम अहम विंदेमिति. सो हाउ कैन आई गेट ए वर्चुअस वाइफ. सेकंड एकदा स कावेरी तीरपत्तने समागतः. वंस ही केम टू द सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी. थर्ड स्वर्णकाराय विक्रेतुम धात्री मुक्तवती. She told the maid servant to sell it to a goldsmith. 4. उसने कृते जले च तान प्रक्षिप्तवती. She put them into the hot water. 5. अतिथये प्रथमं स्नातुं निवेदितवती. She told the guest to take a bath first. अभी हम समानार्थी शब्द देख लेते हैं. अधोदत्तानां संस्कृत शब्दानां समानार्थकम शब्दम अधोदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत. एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं. नगरम तो सदनम स्थानकम पतनम तो नगरम का पतनम. भार्याः सहोदरा सहधर्मिणी भामिनी तो भार्या तो सहधर्मिणी. प्रभुतम तो नितांतम अल्पम समीपम प्रभुतम तो नितांतम. सम्मति अस्वीकृति स्वीकृति संयुक्ति ही तो ये समानार्थी है स्वीकृति. विवाह उद्दाह दाक्ष्यम जोषणम उद्दाह. कौशलम अपटुः पटुः नैपुण्यम तो कौशलम तो नैपुण्यम. जलम अंभोरु तोयम विषम जलम तो तोयम. निक्षा ऊर्ध्वम अपवार्य समीपम तो निक्षा तो समीपम. अभी विरोधार्थी हम देख लेते हैं. अधोदत्तानां संस्कृत शब्दानां विरुद्धार्थकम शब्दम अधोदत्तेभ्यः विकल्पे चित्वा लिखत. फर्स्ट गुणवती तो सगुणा निर्गुणा वृक्षः. ऑपोजिट वर्ड से विरुद्धार्थी है तो निर्गुणा. प्रभुतम अतीव पुनः पुनः अल्पम प्रभुतम तो ज़्यादा अल्पम कम. सकृत तो एकदा असकृत नाक तो असकृत. उष्णम शीतम पानम तोयम तो शीतम. क्रयः पण्यम कृतः विक्रयः तो विक्रयः. स्वकीयम परकीयम परजीवम परहयम. स्वकीयम का ऑपोजिट परकीयम. पंचमी विभक्ति एक वचनस्य रूप. पंचमी विभक्ति में पीछे
आते हैं आत, आत। तो वचने वचनाय वचनात्, वचनात्। स्वर्णकारेण स्वर्णकारात् स्वर्णकार्योः, तो स्वर्णकारात्। काष्ठम काष्ठाभ्याम काष्ठात्, तो काष्ठात्। आतपात आतपेन आतपाय, तो आतपात। अभी षष्ठी विभक्ति देखते हैं। षष्ठी विभक्ति तो बहुत इजी है, पीछे स्य वाला आता है। तो जीवनम जीवनस्य जीवनाय, तो जीवनस्य। तुषस्य तुषेभ्यः तुषयोः, तो तुषस्य। फिर ध्यानस्य ध्यानियन ध्यान्यानि, तो ध्यानस्य। प्रस्तावौ प्रस्तावस्य प्रस्तावा, तो प्रस्तावस्य। सप्तमी विभक्ति एक वचन, उसमें पीछे याम आता है या औ आता है। तो भार्यासु भार्यायाम भार्याभिः, तो भार्यायाम। सालिहि सालौ सालेः, तो सालौ। सम्मतौ सम्मति सम्मत्याः, तो सम्मतौ। कन्यायाम कन्यायाम, कन्यायाम અને कन्याया, तो उसका है कन्यायाम। फिर वर्तमान कालस्य उत्तम पुरुष एक वचन के रूप लिखने हैं, तो उसमें मी आते हैं या ए वहे महे वाले आते हैं। मी वह मह या ए वहे महे। उत्तम पुरुष एक वचन, तो भ्रमामि भ्रमावह भ्रमामह, तो भ्रमामि। विंदावहे विंदे विंदते, तो विंदे। मिलसि मिलथ मिलामि, तो मिलामि। चिंतयेते चिंतयद्वे चिंतये, तो ए, तो चिंतये। अभी आज्ञार्थ अन्य पुरुष बहुवचन, इसमें तू वाले वर्ड्स आते हैं। तो यच्छ यच्छत यच्छन्तु, तो यच्छन्तु। वंदावहे वंदस्व वंदताम, तो ताम वंदताम। कथयितं कथयन्तु कथय, तो कथयन्तु। आहर्तु आहरेताम आहरताम, तो आहरन्ताम। अंताम आते हैं, अंताम वाले वर्ड्स आते हैं। अभी विद्यार्थ अन्य पुरुष एक वचनस्य रूप। वसेत वसेन वसेव, तो वसेत। मिलेः मिलेत मिलेयम, तो मिलेत। चिंतयेत चिंतयेताम चिंतयेषु, तो चिंतयेत। तो यहाँ पे हमारा संस्कृत का क्लास 10 का 5th नंबर का चैप्टर गुणवती कन्या वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।